Sir, we have completed till Article 302. Okay. Article 302, na? Article 302. Just a minute. Okay, I think I have discussed the Article 302, na? Article 302 of the Constitution, which explain the power of the Parliament to impose the rules and regulations, to impose the restrictions on trade, commerce, business organizations. Okay, I think I have completed Article 302. Today, I am going to discuss with Article Yes, sir. 303. Yes, sir. So Article 303 deals with the restrictions on the, you need to actually, these articles you need to remember all these things. Okay, this will going to come here in examination, what Article 302 deals with, or what Article 302 deals with. Okay, these are the questions they will going to get. You need to by heart these things. So Article 303 deals with the restrictions on the legislative power of the union, and of the state with regards to regarding to trade and commerce. It provides that parliamentary shall not have power to make any law giving any preference. Oh, I think I have also discussed Article 303. ये आर्टिकल 303 क्या डिस्कशंस करते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली में एक लॉ पास करवाया जाता है। ऐसा लॉ है कि जो कि पार्लियामेंट जो है चाह कर भी ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस मतलब ऐसा कोई प्रेफरेंसेस किसी एक स्टेट को नहीं कर सकता। ठीक है, एवरी स्टेट शुड बी इक्वली ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 303। इसलिए थ्रू लेजिस्लेटिव असेंबली के माध्यम से वो पार्लियामेंट मतलब लेजिस्लेटिव की असेंबली के माध्यम से वो लॉज को मतलब वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि कोई भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी पावर में है वो चाह कर भी ऐसा ना करे कि कोई दूसरे स्टेट को ज्यादा सबसे ज्यादा प्रेफरेंसेस दे ताकि अपना वोट बैंक को वो स्टेबल करे। तो दिस इज आर्टिकल 303। नाउ आर्टिकल 304 explain states power to regulate trade and commerce. Okay, article 304 explains states power to regulate trade and commerce, that details impose on goods imported from from other states or the union territories any tax to which similar goods manufactured or produced in that state are subject. So however, as not to discriminate between goods so imported as goods so manufactured or produced, b impose such reasonable restrictions on freedom of trade, commerce, or intercourse, or within the state as may be required in public interest. तो आर्टिकल 304 एक्सप्लेन करता है स्टेट पावर टू रेगुलेट ट्रेड एंड कॉमर्स। आर्टिकल 304 रेगुलेट trade and commerce in the state. The details. What are the details? Number one or number A, impose on goods imported from other state or union territories. आर्टिकल 304 क्या करता है? ट्रेड एंड कॉमर्स के को रेगुलेट करता है एवरी स्टेट में। पहला क्या काम करता है? पहला आर्टिकल 304 का काम ये होता है कि जो भी अदर स्टेट से गुड एक्सपोर्ट करते हैं उसको इम्पोज करना होता है। नंबर बी, number B is number B is impose such reasonable restrictions on freedom of trade and commerce or intercourse or within the state as may be required in the public interest. Now article 304 section B, it also impose that no means any state cannot impose taxes, okay, taxes anyhow, okay, taxes anyhow on the ऑन एनी ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने मन मर्जी के मुताबिक टैक्स लेविड दूसरे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस करने के लिए जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, वो कोई भी स्टेट अपने मन मर्जी के मुताबिक टैक्स लेविड नहीं कर सकता है। दिस इज आर्टिकल 304 सेक्शन बी डील्स विद। ओके, now, Article 305 saves existing laws and laws providing for state monopolies insofar as the president may by order otherwise direct. Okay, now article 304 क्या कर 305 क्या करते हैं? Article 305 save existing laws and laws providing for state monopolies insofar as
the president may be by order, otherwise direct. Sometimes the government or sometimes state government, okay, do monopoly, okay, do monopoly by preferences some other state, by preferences some organization, special preferences given to some organizations, okay, चाहे टैक्स माफ कर देना हो, चाहे बहुत सारा जमीन बिना मतलब के वो दिलवा देना हो, ऐसा बहुत सारे आपको न्यूज में आता होगा कि स्टेट गवर्नमेंट ने इस ऑर्गेनाइजेशंस को इतना लोन प्रोवाइड करवाया, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने बैंक के माध्यम से इतना टैक्स माफ कर दिया। ये जो स्पेशल प्रेफरेंसेस स्टेट गवर्नमेंट कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं, तो ये करने के लिए आर्टिकल 305 जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर देता है। तो दिस वर्क आर्टिकल 305, इसके लिए आर्टिकल 305 बनाया गया है। Now, Article 307 empower Parliament to appoint such authority as it is considered appropriate for carrying out purposes of Article 301, 302, 303 एंड 304। आर्टिकल 307 क्या करते हैं? आर्टिकल 307 एम्पावर करते हैं पार्लियामेंट्री रूल्स एंड रेगुलेशंस को, ताकि वो अप्रोप्रिएटली रन करे। कौन से आर्टिकल पे? आर्टिकल 301, आर्टिकल 302, आर्टिकल 304 एंड आर्टिकल 303। ये चेक कर, आर्टिकल 307 जो है, इस आर्टिकल्स जितने भी रिमेनिंग आर्टिकल है 301, 2, 3, 4, 5, ये आर्टिकल्स को ऑब्जर्व करते हैं। कुछ भी चेंजेस अगर करना हो, कुछ भी अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस इंपोज करना हो इस आर्टिकल्स पे, तो ये 307 के माध्यम से किया जाता है। दिस कॉल्ड आर्टिकल 307। इट कैन कन्फर on such authorities such power and duties as it think necessary। okay, अगर चाहता है आर्टिकल 300, अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहता है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को नया ऐड किया जाए 301, 2, 3, 4 में, तो आर्टिकल 307 के माध्यम से ये नेसेसरी चेंजेस जो है इस आर्टिकल में किया जा सकता है। तो दीज आर द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, स्पेशल आर्टिकल्स impose or regulate proper business to grow, proper business administration to run smoothly any business। okay, these are the important articles। am I clear madhusmita? कोई डाउट है यहाँ पर? is it clear to you students who are listening to me? Yes, sir. Any doubt? Please tell me, because here comes to the end of this article. From article 23 to article 307, I have already completed. I have discussed each and every point. Still, before going to any other points, I am repeating the same points again. If you have any doubt, please ask me on any article. No doubt, na? Okay. No, sir. Then I'm going to the next point, that is important business law. What are important business law? So that is, look at the full form, MRTP, Monopolies Restrictive Trade Practice Act. Always remember, what is MRTP? Very carefully listen to me. MRTP stand for Monopolies and Restrictive Trade Practices. Okay, this is an parliamentary act. What are the rules? What are the business laws in this act? Number one, the act came into force from 1st June 1970. Okay, the act aims to prevent concentration of economic power, comma, provide for control of monopolies and protect consumer interest. Currently, the MRTP Act has been renamed as Competition Act 2002 with a few changes to it. Now, this act came into force in 1st June 1970. What is the main importance of this act? This act always aimed to prevent concentration of economic power, okay, to prevent stop from using economic power unnecessarily or unlawfully, okay, providing this, it also control of monopolies and protect कंज्यूमर इंटरेस्ट। मोनोपोलीज करने से ये रोकते हैं, कंज्यूमर इंटरेस्ट को ज्यादा प्रेफरेंसेस देते हैं। करंटली द MRTP एक्ट हैज बीन रीनेम्ड एज कंपटीशन एक्ट।
याद रखिएगा इस चीज को, इट मे गोइंग टू कम टू द एग्जामिनेशंस। एमआरटीपी को अभी रीनेम किया गया है और उसको नया नाम मिला है कंपटीशन एक्ट। ओके, 2002 में ये चेंज आया है। नाउ number 2, to ensure that the operations of the economic system does not result in the concentration of economic power in the hands of few. Okay, what is the second point? To ensure that the operation of the economic system does not result in the concentration of economic power in the hands of few, to provide for the control of monopolies, to provide monopolistic and restrictive trade practices. After the amendment of the Act in 1984, a fourth objective was introduced, which was regulation of unfair trade practices. Okay, so this is the point number 4, which is important. What is important? Just to control or just to concentrate on the economic system of the country. It also provide the control of monopolies. It also provide monopolistic and restrictive trade practices. Okay, okay, unnecessary unlawful trade practices ये control करता है. After the amendment को बिल का एक नाम amendment होता है. After the amendment of this act in 1984, इस चेंजेस किया गया है, इस बिल को पावर में लाया गया है इन 1984. अ फोर्थ ऑब्जेक्टिव वाज इंट्रोड्यूस, एक नया ऑब्जेक्टिव इंट्रोड्यूस किया गया है आफ्टर 1984, व्हिच वाज क्या है? रेगुलेशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जैसे स्मगलिंग, उसके बाद स्मगलिंग होता है, अननेसेसरी स्मगलिंग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, अननेसेसरी स्मगलिंग ऑफ जो लॉट ऑफ व्हाट इज कैन से लॉट ऑफ जो होता है ना, चरस, गांजा, अफीम, जो ड्रग्स, ये फोर्थ जो ऑब्जेक्टिव है वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1970 में। आपको इफ यू गो थ्रू द हिस्ट्री, आप थोड़ा सा अगर हिस्ट्री को देखोगे ना, 1970 से पहले ना, ये सारा कुछ जो गुड्स होता था वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। अननेसेसरी जो प्रैक्टिस हो सकता था ना, ये मतलब ये क्या मैं बोलूँ आपको, 1970 पे पहले ये थोड़ा सा मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं था, लेकिन 1984 के बाद ये नया अमेंडमेंट जब ऐड हुआ है इन द फोर्थ, तब जाके ये रेस्ट्रिक्शंस किया गया, स्मगलिंग, ड्रग स्मगलिंग जो होता है, ये सब रेस्ट्रिक्शंस किया गया। और इसका सबसे जीता जाता जो एग्जाम्पल है ना, आप अगर एयरपोर्ट अथॉरिटीज में चले जाओगे, एयरपोर्ट अथॉरिटीज या शिप बिल्डिंग कंसाइनमेंट में चले जाओगे, तो वहां पर ये इसका सबसे जीता जाता एग्जाम्पल्स यू विल गोइंग टू गेट। ओके, देयर लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस आर देयर इन द एयरपोर्ट सिक्योरिटी। अभी रिसेंटली इन फ्राइडे देयर इज अ न्यूज came from CNN, IBN, or from that is Astak. The official, administrative official of Mr. Shah Rukh Khan, the Bollywood actor, smuggling thousands, not thousands, hundreds of Rolex watches from foreign countries. ये उसको पकड़ा गया है। उसने कहा है कि मैं शाहरुख खान का जो ऑफिस असिस्टेंट हूँ, या फिर मतलब वहां पर काम करता हूँ, एक न्यूज आया है। तो दीज जो अननेसेसरी, जो इतना अनवांटेड चीज जो लाना है, जो जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा आप अगर लाते हो, तो ये जो है विजिलेंस आपको ऑफिसर जो है आपको मतलब आपको फिर वो अपना कस्टडी में आपको लेगा। तो ये जो अमेंडमेंट बना था ये 1984 के बाद में ये बिल पास हुआ था। ठीक है, नहीं तो पहले ऐसा नहीं था, आप जितने भी सामान ला सकते हो। अभी अब इफ यू आर ट्रेवलिंग इन अ रेलवेज, नाउ रेलवेज इन द टिकट, in the back of the ticket, if you are doing online tickets और ऑफलाइन अगर टिकट आप कभी परचेज करते हो, यू जस्ट सी द आफ्टर ओवर फ्लिपिंग द ticket cards that only 40 kgs of the baggages and luggages are allowed to travel with passengers. Okay, 40 kg, not more than that, 40 kgs. ओके, अगर 40 kgs से ज्यादा होगा तो विजिलेंस ऑफिसर अगर आपको पकड़ कस्टडी में लेता है तो दे विल कैन इम्पोज फाइन, और अगर कुछ इलीगल मिलता है तो आपको सेंटेंस 5 years सेंटेंस इम्प्रिजनमेंट आपको मिल सकता है, और उसके बाद आपको चार्जेस भी लगेगा। तो ये सारा कुछ जो अमेंडमेंट्स या चेंजेस जो भी नया बना है लॉ, वो 1984 के बाद मिला था। The third, MRTP stand for Monopolies Restrictive Trade Practice Act, extend to the whole of India except Jammu and Kashmir.
unless the central government otherwise directs this act as shall not apply to any undertaking owned or controlled by government company, any undertaking owned or controlled by the government, any undertaking owned by the company established or undertaking by the central provinces or the state act. लेकिन ये जो रूल MRTP एक्ट दिस एक्सटेंड टू द होल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ये होल इंडिया में है लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है, अनलेस द सेंट्रल गवर्नमेंट अदरवाइज डायरेक्ट दिस एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है, अंडरटेकिंग है, तब ये जो लॉ है MRTP विल नॉट गोइंग टू एक्ट if the central government or the state provinces are collaborated with any particular organizations। ठीक है, कोई भी देखिएगा, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कोई भी अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, ये जो जितने भी MRTP रूल्स एंड रेगुलेशन ट्रेड एक्ट होता है वो इम्पोज नहीं होता है, वो एक्टफुल नहीं करता है। ठीक है, और दूसरी बात, जम्मू कश्मीर में ये लॉ नहीं है, अब तक ये लॉ नहीं वहां पर बनाया गया है। ठीक है, एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर होल ओवर इंडिया में ये बनाया गया है, लेकिन कोई अगर संस्थान सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, अंडरटेकिंग है, तो वो ये लॉ वहां पर इम्पोज नहीं होगा। सो डोंट गेट कंफ्यूज विद ऑल दिस थिंग्स। ओके, any trade union or otherwise any trade union or other association of workmen or employees formed for their own reasonable protection as such workmen or employees, any undertaking engaged in an industry, the management of which has been taken over by any person or body of persons under power of central government. Any undertaking owned by any undertaking owned by a cooperative society formed and registered under any central provincial or state act, any financial institution। देखो पॉइंट नंबर 4 क्या बोल रहा है, एनी ट्रेड यूनियन or other association of workmen or employees formed for their own reasonable protection such as workmen or employees। Okay, so this MRTP will act also with the trade union or other association of workmen or employees formed for their own reasonable protection, for own reasonable protection or such workmen or employees। कोई भी पर्सनल वर्कमैन, एम्प्लॉयज और ट्रेड यूनियन एसोसिएशन इस MRTP एक्ट को अपने इख्तियार में लेके उसे एक्सटेंड कर सकता है, उस पे ये MRTP जरूर लागू होगा। ठीक है, बिकॉज वो अंडरटेकिंग नहीं है। any undertaking engaged in an industry, the management of which has been taken over by any person or body of persons under power by the central government। okay, और क्या बता रहा है, एनी अंडरटेकिंग एंगेज्ड इन द इंडस्ट्री द मैनेजमेंट ऑफ विच हैज बीन टेकन ओवर बाय एनी पर्सन और बॉडी ऑफ द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तब ये इम्पोज नहीं होगा। दूसरी बात, एनी अंडरटेकिंग ओन्ड बाय cooperative society formed as registered on any central provincial or state act financial institutions will not going to impose this MRTP act। कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज जैसे कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, दीज आर द फ्यू बैंक्स और सोसाइटीज आर देयर और सेंट्रल प्रोविंशियल्स आर देयर और कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर देयर or any financial institutions are there which financial institutions collaborated with this cooperative or central government, वहां पर MRTP एक्ट एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है। okay, number 5 is a monopolistic trade practices is that which represent abuse of market power in productions and marketing of goods and services by eliminating potential competitors, changing unreasonably high prices, preventing or reducing competitions, limiting technical development, deteriorating product quality, etc। ठीक है, what the point number 5 is deals with,
A monopolistic trade practice, monopolistic means single trade practice, is that which represent abuse of market power, which in which is that which represent abuse of market power in production and marketing goods and services by eliminating potential competitors, charging unreasonably high price, preventing or reducing competitions, limiting technical development, deteriorating product good and quality, etc. This in these conditions, MRTP specially will going to act. ठीक है. तो मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस, मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस मतलब सिंगल ट्रेड प्रैक्टिस जहां पर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जाता है, जहां पर प्रोडक्शंस का क्वालिटीज पे ध्यान नहीं दिया जाता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर में दे डोंट केयर ऑफ द कस्टमर प्रैक्टिसेस, they are trying to deteriorating the product, they are trying to deteriorating the quality of the goods, they are not providing the proper services to the customers, where the prices are high, but the according to the high prices, but the quality is very low, customers are not been satisfied. In this case, the MRTP will going to act, because this conditions the market or any organization working or doing this type of practices are called monopolistic trade practices. And if any company finds with this monopolistic trade practices, then MRTP will going to act against those company or against those organization. Am I clear with this 5 point? Come to the next point number 6. Poorly resourced commission. Okay, inadequacy in dealing effectively with anti-competitive practices due to lack of definitions, cumbersome procedures, scarce resources, absence of specifications of identifiable anti-competition practices, anti-competition practices like cartels, predatory pricing, rigging, etc., are not specifically mentioned in MRTP Act. ठीक है. तो पॉइंट नंबर 6 क्या है, जो पूर्ली रिसोर्सेस यूज करता है, पूर्ली उसका कमीशन इनटेक करता है, इनएडिक्वेट इफेक्टिव डीलिंग्स नहीं करता है, एंटी प्रैक्टिसेस करता है, लैक ऑफ डेफिनेशंस, प्रॉपर क्यूबरसम का मतलब होता है प्रॉपर स्प्रेड और एलोकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू प्रॉपर कस्टमर्स, वो नहीं करता है. प्रोसीड्यूर्स जो है, प्रोडक्शंस का जो प्रोसीड्यूर्स है, टेक्नोलॉजी है, वो अनलॉफुली करता है. रिगिंग होता है, प्राइस रिगिंग का मतलब रैगिंग नहीं, रिगिंग का मतलब फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइसेस डे टू डे, फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइसेस डे टू डे. ओके, कोई प्राइसेस का फिक्स स्टेबल नहीं होता है, एमआरपीज नहीं होता है, फ्लक्चुएट. जैसे आप लोग जो साक्षी मार्केट में बहुत सारा ऐसा मार्केट है, फुटपाथ में पड़ा हुआ रहता है, कोई कस्टमर को 50 रुपया में मिल जाता है, कोई कस्टमर से 100 रुपया ले लेता है. दिस इज कॉल्ड रिगिंग ऑफ द गुड्स. ओके, तो इस तरह का जो है, इस तरह का जो प्रैक्टिसेस होता है, एमआरटीपी एक्ट करता है. एमआरटीपी इस तरह का जो काम करता है, इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस जो भी करता है, तो एमआरटीपी एक्ट के अनुपात इनको फिर पनिश किया जाता है, इनका फिर गुड सीज कर दिया जाता है. Point number 3, at the time of drafting of the MRTP Act, the economy and trade milieu prevalent at that time constituted India only for its various provisions. However, even since, there has been considerable movement toward liberalization, privatizations, and globalizations. That is the new economy policy in 1991. Hence, the law needed to yield to changing the scenario of on both economic and trade front. Okay, क्या बता रहा है, आफ्टर टाइम ऑफ ड्राफ्टिंग एमआरटीपी एक्ट, जब एमआरटीपी एक्ट को ड्राफ्टिंग कर रहा था, मीन्स राइटिंग कमिंग टू एन एक्ट. ड्राफ्टिंग का मतलब पेन एंड पेपर में लिखना नहीं, यहाँ ड्राफ्टिंग का मतलब होता है व्हेन एमआरटीपी कम्स इनटू एन एक्ट, पावर में जब आया, द इकोनॉमी एंड ट्रेड prevalent at that time constituted India only for its various provisions. इसको various provisions के लिए enact किया गया था by the constitutions of India. However, ever since, there has been considerable movement. However, there has been considerable movement toward liberation,
privatizations and globalizations, that is new economy policy जो कि 1991 में enact हुआ था. Hence the law needed to help, yield का मतलब help होता है. Hence the law needed to yield to the changing scenario on both the economy and trade fronts. So when the new economy policy was constituted in the year 1991, then the movement towards liberalization, privatizations, and globalizations and economic trade front, there has been lot of changes worked on this three pillars of economic growth, that is liberation, privatizations, and globalization. Okay, it is can be said that MRTP Act was successful to an extent. It can be said that the MRTP Act was successful to an extent. However, due to scarcity of resources, lack of clearly defined procedures, and cumbersome rules and regulations, the act was not as effective as it was supposed to be. Also, the changing economy and trade environment brought by the new economy policy 1991 made it necessary for a change in MRTP Act. It can be said that MRT Act was successful to an extent. However, due to scarcity of resources, lack of clearly defined procedures, and cumbersome rules and regulations, the Act was not as effective as it was supposed to be. Also, the changing necessary economic and trade environment in the new economic policy 1991 made it necessary for the changing of the MRTAP Act. इतना अच्छा रूल्स एंड रेगुलेशंस होने के बावजूद भी इसका कोई मतलब अस्तित्व या इसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से इंडस्ट्री में हुआ ही नहीं, बिकॉज lack of resources, because the points were not clearly defined. Okay, the process, the amendment was not clearly mentioned, and the rules and regulations are very hodgepodge. The rules and the regulations are not clearly मेंशन और डेकोरेटिव वे में मेंशन किया हुआ नहीं था, जिसकी वजह से ये जो न्यू इकोनॉमी पॉलिसी 1991 में बना था वो उतना इफेक्टिव नहीं हुआ था, और जिसकी वजह से ये नेसेसरी चेंजेस अब तक एमआरटीपी में एक्ट में जो है वो अभी तक काम कर रहा है, काम चल रहा है 1991 के बाद भी, और अभी तक इसका पूरा जो एकदम रिफाइंड वे में अभी तक इसका नहीं आया. क्योंकि जब भी देखिएगा कंज्यूमर एक्ट, ट्रेड एक्ट में कोई भी लॉस पास होता है, कोई ना कोई बखेड़ा उसमें खड़ा हो जाता है या कोई ना कोई नेगेटिव उसमें आ ही जाता है. इसका कोई क्लियर क्लियर सोल्यूशंस अब तक नहीं आया है, क्योंकि बहुत सारा जो पॉइंट्स है ना वो क्लियर नहीं है. ठीक है, तो जिसकी वजह से एमआरटीपी एक्ट जो है इतना पावरफुल होने के बाद भी, ड्यू टू द स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, ड्यू टू द लैक ऑफ क्लियर points, due to the lack of clear mentioning points, deficiency in points, the MRTP Act was not imposed perfectly till now in the business organizations. Am I clear, students? Or if you have any doubt, tell me. कोई डाउट है अभी तक? दीज आर द 7 to 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ बिजनेस लॉ. एनी डाउट? नो ना? कैन आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट पॉइंट? हेलो, एम आई ऑडिएबल? यस सर. कोई डाउट है? नो सर, यहाँ तक नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1995 1951. ठीक है, this is Industrial Development and Regulations Act 1951. IDRA 1951, that is Industrial Development Act 1951. Industrial Development Regulation Act passed in 1951 to implement the IPR 1948. The IPR had laid down the national objective to be achieved. For this, the government must have the power to direct, regulate, and control industrial investment, location, expansion, management, growth, etc. Okay. Now, these are the important Industrial Regulation Development Act जो कि पास हुआ था 1951 में, जिसका मेन मोटो था to implement the
industrial policy and resources resolution to implement the the IPR, or you can say to implement the Industrial Policy Resolutions 1948. इसको implement करने के लिए IDRA बनाया गया था. IPR जो Industrial Policy Resolutions जो है had laid down the nation objective to be achieved. Okay, for this the government must have the power to direct, regulate, and control industrial investment, location, expansion, management, growth, etc. ठीक है. इसका काम क्या है, आईडीआर का या आईपीआर का काम क्या है? जस्ट टू हैव द पावर टू डायरेक्ट, टू रेगुलेट, टू कंट्रोल द इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, to expand expansion of industrial growth, and to expansion the management and growth etc. इसका काम है industrial policy regulation. Next है the act empowered that the government to make rules for regulation of existing industries, license all the consultation with state government. On this matter, Act provided for constitutions of a central advisory council and development council. Next important point क्या है? Just to regulate or just to develop the industries, just to develop the what you can say consultations, just to empower the consultation which are allocated with the state government on this matter. Okay, this is the another important IPR resolutions. Next hai coverage of this act. What is the coverage of this act? The whole of India and to all factories, the whole of India and to all factories manufacturing any item in the first schedule to the act, exemption by the GOI by official gadget notifications. Okay, how this coverage of this act or IPR used to do? The whole of India and to whole of the factories manufacturing any item in the first schedule of the act. Okay, क्या बता रहा है? The whole India and to whole factories, if the whole India or manufacturing factories, any item they are factoring, if they are manufacturing any item, they need to schedule this act. They need to schedule this act before doing any productions. Okay, exemptions, ये प्राइवेट सेक्टर के लिए ये लॉ इंप्लीमेंट किया गया है, लेकिन देखो यहाँ पर दूसरा लाइन में लिखा है एग्जम्पशंस, ये रूल अबाइड करता है उसके लिए जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर कोई भी ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशंस के माध्यम से, या कोई भी कंपनी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या गैजेट नोटिफिकेशन के माध्यम से जुड़ा हुआ है, उसके लिए IDRA लॉ इंपैक्ट या इम्पोज नहीं होता है. पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है? सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल एंड डेवलपमेंट. व्हाट इज दिस? सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल डेवलपमेंट काउंसिल या CAC by government of India to advise on matter of development and regulation of such industries. Chairman and all members to be appointed by government of India, max number of 30, to represent interest of owners, employees, consumers, primary suppliers, etc. of such industry. Also, subcommittee of CAC. What is the work of CAC? जैसे Central Advisory Council Development Council. According to Central Advisory Council Development, there must be or there should be a maximum 30 members should be there in CAC, and these 30 members will look after the primary consumers. Their first motto is to look after the primary consumers. Next hai the primary suppliers, and also they look after the owners, employees, and to such industries which are in the बिलो पॉवर्टी स्टेट्स. जो ऐसा कोई इंडस्ट्रीज है जो कि बिलो पॉवर्टी स्टेट्स पे बिलोंग करता है, तो ये CAC जो कि 30 मेंबर्स का एक बोर्ड ऑफ मेंबर्स का जो 30 मेंबर बना हुआ है, इसका काम होता है इस सारी चीजों को ऑब्जर्व करना है. प्राइमरी एम्प्लॉयज, प्राइमरी प्रोडक्शंस, कंज्यूमर्स, कंज्यूमर एक्ट,
गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शंस, ये सारा कुछ ये CAC 30 मेंबर्स ऑब्जर्व करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये सारा जो है ना, CAC, सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल, डेवलपमेंट डेवलपमेंट काउंसिल, कवरेज ऑफ द एक्ट, ठीक है, ये सारा जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशंस में आता है, विच इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस एक्ट 1951। सो डोंट गेट कंफ्यूज, सर ये कौन सा लॉ में आता है? ये जो लॉ बना गया है, ये लॉ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन में आता है, इसके अंडर में इतना सारा सब पॉइंट्स है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके। द नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट काउंसिल, ये एक और काउंसिल है जो कि इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन पॉलिसी के अंडर में आता है। इसका काम क्या होता है? दिस डेवलपमेंट काउंसिल परफॉर्म द फॉलोइंग वर्क। क्या वर्क फॉलोइंग करता है या क्या काम करता है? रिकमेंडिंग टारगेट्स फॉर productions, recommending target for the production means this development of council set the target for the productions, okay। आपको इतना कंपनीज में इतना ही प्रोडक्शन आप कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, फॉर एग्जांपल दोज हु आर द कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, दोज हु आर द कंस्ट्रक्शन industries, now if there is no rules or there is no law imposed on this construction business or construction organizations, then these people what they will do, they will going to the capture each and every land unlawfully, okay, they going to hire any employees paying any money, any remuneration, and they capture or hire any land, they capture the land by their own means. They never ever going to think about the people, about the consumer, they only think about the profit. For this, the government has set the parameters, okay. Now if you are in this construction business, this much areas, if you want to create a building, if you want to create a shopping mall, this much areas of a land you will going to acquire, and on this much acquired land you will going to construct a plot, okay. So the government or the council of or the development council set the parameters according to this, okay। मैंने जस्ट एक एग्जांपल आपको बताया, ये डेवलपमेंट काउंसिल इस तरह का काम को करता है, ठीक है। सेट द पैरामीटर्स, सेट द प्रोडक्शंस पैरामीटर्स, कोऑर्डिनेटिंग प्रोडक्शन प्रोग्राम, कोऑर्डिनेट करता है कैसे प्रोडक्शन, उसका प्रोग्रामिंग कैसे कैसा करना पड़ेगा, रिव्यूइंग द प्रोग्रेस, और डे टू डे इसको रिव्यूज करते हैं कि इसका प्रोग्रेस कैसा चल रहा है, काम सही से हो रहा है कि नहीं, अनलॉफुल काम तो नहीं हो रहा है। दीज आर द वर्क्स डन बाय द डेवलपमेंट काउंसिल। द नेक्स्ट वन इज साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल, ओके, द डेवलपमेंट काउंसिल एक और काम करता है, कंट्रोल मटेरियल वर्क्स, ओके, एंड ऑल्सो प्रोवाइडेड ट्रेनिंग एंड रीट्रेनिंग टू द वर्कर्स, ओके। ये काम भी डेवलपमेंट काउंसिल करता है। जैसे स्टील प्लांट में एक मैंडेटरी प्रोग्राम्स होता है कि एवरी 6 months alternate you need to upgrade your co-workers, every 6 months or 1 year alternate you need to upgrade your co-workers, you need to train your co-workers, okay। That is why if you go to the if while going to the Sakchi, yeah, or while you are beside the wall of Tata Steel plant, there is an office at the right side. While going to the Sakchina, there is an office at the right side, training department. Okay, it is compulsory. Now this has been vigilance. There is a strict vigilance and by the development council, and it has been they provided notice to every training, every such organizations or every such plants that they need to train the co-workers, or they need to train the co-workers after 6 months alternate or after 1 year alternate, okay, this is compulsory nowadays। तो ये जो काम करता है ये डेवलपमेंट काउंसिल करता है, जो भी लेटर्स आता है गवर्नमेंट गैजेट की नोटिफिकेशन के माध्यम से, डेवलपमेंट काउंसिल इस गैजेट नोटिफिकेशन के माध्यम से ये जो है रूल्स को फॉलो अप करते हैं। नेक्स्ट है साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, also industrial psychology, standardizations of accounting and costing method, statics, decentralizations, and subcontracting for SSIS. Okay, there is another important work of development council. What is their work? They used to
do the scientific and industrial research. Okay, there are also important work is to do a scientific and industrial research. They are also looking after the standardization of those industries. They are measuring the standardizations of those workers. They are also measuring the accounting standardizations of accounting and costing method. They are also observing this thing, and they are also decentralizing and subcontracting if they found the statics is not perfect of any organization. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टैट्स है, उसका जो प्रोडक्शन लेवल है, उसका जो वर्क है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग है, ये अगर कॉस्टिंग मेथड है, ये अगर सही नहीं है, तो उस चीज को वो डिसेंट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, नल एंड वॉइड कर देते हैं, या फिर दोबारा उस चीज को करने के लिए वो आग्रह करते हैं। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर और इंपॉर्टेंट वर्क डन बाई डेवलपमेंट ऑफ काउंसिल। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7 इज रेगुलेशन ऑफ शेड्यूल। the next point is a regulation of scheduled industry. Next point है regulation of scheduled industries. What is the meaning of this? Registration, registration of existing undertakings. Okay, रजिस्ट्रेशन करना। बहुत सारे कंपनीज का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो होता है, जैसे आपको पता होगा कि ISO 9001 2000 आपको देखिएगा कोई कंपनी के नीचे लिखा हुआ रहता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ये मीनिंग होता है कि आपने इसको बोर्ड ऑफ काउंसिल के माध्यम से या इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेगुलेशन के एक्ट के माध्यम से आप इसको इस कंपनीज को पास किए हो, चला रहे हो। तो टाइम टू टाइम यू नीड टू व्हाट यू नीड टू मेक अ रजिस्ट्रेशन। ओके, तो ये जो काम है ये भी डेवलपमेंट ऑफ काउंसिल इसको देखते हैं। ओके, गेट सर्टिफिकेट्स विद इंस्टॉल कैपेसिटी एंड अदर डिटेल्स। उसके बाद सर्टिफिकेट, बहुत सारे आप मिठाई की दुकान में देखे होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, आप इस चीज को ऑब्जर्व कीजिएगा, जब भी कोई मिठाई की दुकान में जाइएगा, वो एक सर्टिफिकेट दे यूज टू गेट, FCI certificate they used to get the quality of, they used to measure the quality of the sweets, they used to measure the quantity of the sweets, they used to measure the what you can say how much purity materials are there in the sweets and all। तो कोई भी शॉपिंग स्वीट मार्ट में या फिर कोई भी ऐसा शॉपिंग मॉल में आप चले जाइए, वहां पर देखिएगा FCI का एक सील किया हुआ सर्टिफिकेट उन लोगों को मिलता है। एंड दिस सर्टिफिकेट यूज टू बी रजिस्टर्ड for every 1 year, every after every alternate 1 year you need to upgrade this certificates। okay, जैसे फॉर एग्जांपल एक और बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूं, कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हुआ, प्राइवेट कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो होता है, उसको हर एक साल आप ये एनसीआरटी, नॉट एनसीआरटी, आई फॉरगॉट दैट पर्टिकुलर नेम, एवरी 1 ईयर ना, उसको एक साल के बाद ना वो करना पड़ता है, एक सर्टिफिकेशन या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस उसको करवाना पड़ता है। आई फॉरगॉट दैट पर्टिकुलर नेम। ये कोई भी प्राइवेट कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेज को ये करना पड़ता है। जब तक वो यूजीसी ग्रांटेड नहीं होगा ना, तब तक ये सारा जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी है, आफ्टर 5 years दे यू टू डू द यूजीसी करवाना पड़ेगा, नैक लेना पड़ेगा। सर दीज आर ऑल द सर्टिफिकेट, दीज आर ऑल द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ओके, तो आपका पैरामीटर्स कैसा है उसको मेजर करने के लिए ये प्रोसेस बहुत जरूरी है, और ये प्रोसेस इंडस्ट्रीज में कौन करता है? डेवलपमेंट ऑफ काउंसिल करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। नेक्स्ट पॉइंट है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, ये और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल न्यू यूनिट्स विल रिक्वायर ए लाइसेंस। कोई भी नया जो यूनिट्स है या कोई भी नया फैक्ट्रीज आप इंस्टॉल करना चाहते हो, लगाना चाहते हो, उसके लिए लाइसेंस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। ओके, फॉर दिस देयर विल बी लाइसेंसिंग कमिटी। एक लाइसेंसिंग कमिटी क्रिएट किया गया है। इस कमिटी में क्या है? 5 टाइप्स ऑफ लाइसेंस होता है। देयर आर बेसिकली 5 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ लाइसेंस। Number one, for new undertaking, substantial expansion, production of new article, changes in location, carrying on business, government may give exemptions, revoke और amendment of license। ये 5 तरह का लाइसेंस होता है। नंबर 1 है अंडरटेकिंग, न्यू अंडरटेकिंग। नेक्स्ट होता है एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट्स, न्यू चेंजेस ऑफ आर्टिकल, चेंजेस इन लोकेशन, कैरिंग ऑन बिजनेस, जैसे COB, कैरिंग ऑन बिजनेस, COB, government exemption, okay, revoke of license, amendment of license।
ये 5 इंपॉर्टेंट लाइसेंस होता है। कोई भी नया कंपनी जब इंस्टॉल किया जाता है या फिर कोई नया कंपनी जब अपना शिफ्ट करना चाहता है, प्रोडक्शन चेंज करना चाहता है, या नया यूनिट जो रीओपन हुआ है, उसके लिए लाइसेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और उसके अंडर में ये 5 इंपॉर्टेंट लाइसेंस आता है। Number 9 point, objective of the license achieve desired pattern of dispersal of industries, encourage a new entrepreneurs and avoid concentration of power and promote SSI's regulation, foreign capital, and proper use of technology and scale economic control in industrial pollutions, ensure adequate supply of goods, employment generations. Okay, now what is the main objective of the license? लाइसेंस का क्या मेन ऑब्जेक्टिव रहता है? पहला पहला है, देखो यहाँ पर तो नंबर 1 2 करके दिया नहीं है, पूरा एक साथ दिया गया है। मैं इसको थोड़ा सा आपको बाइफर्केशन करके बताता हूँ। Objective of the license achieve desired pattern of dispersal industrial, encourage new entrepreneurs. The main objective of the license is to just encourage the new entrepreneurs, okay, and to avoid concentration of power and promote SSI unit. SSI unit जो होता है स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल मेजरमेंट, एक मेजरमेंट होता है कि आपका इंडस्ट्रियल रेगुलेशंस जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, वो कितना आपका अच्छा है, that is measured in SSI regulation law. फॉरेन कैपिटल्स, इसको इसके लिए लाइसेंसिंग का इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉपर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके लिए लाइसेंसिंग का इस्तेमाल हुआ जाता है। लार्ज स्केल इकोनॉमिक कंट्रोल के लिए एसएसआई का इस्तेमाल होता है या लाइसेंसिंग का इस्तेमाल होता है। एम्प्लॉयमेंट, गुड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए लाइसेंसिंग का यूटिलाइजेशन होता है। जिस कंपनी का लाइसेंस अच्छा है, जिस कंपनी का लाइसेंस एवरी ईयर रिन्यू होता है, उस कंपनी का देखिएगा प्रोडक्शन अच्छा होता है, रेमुनरेशन अच्छा मिलता है, और वहां पर एम्प्लॉइज जो है एवरी ईयर्स दे आर रीट्रेन ट्रेन और जनरेशन होता है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ, और दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लाइसेंसिंग। Number 10th is provide to investigate, power to investigate, exercise control, take over management. Okay, even so, if unjustifiable fall in output or in input or rise in price, such order to have effect of maximum 5 years may be extended up to 12 years of investigation. Now, power to investigate. Now, license are also important because during providing this license to any company, they have a power to investigate those company, whether the company is following the rules and regulations or not, whether they are producing the proper way of goods or not, whether the qualities of the good are proper or not. These are also important in licensing. Okay, now next one is point number 11, power to provide relief to certain industrial undertaking. पावर टू प्रोवाइड रिलीफ टू सर्टेन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होता है, मैंने पहले भी बताया, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स जो होता है या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज अंडर में ये अंडरटेकिंग होता है, उसके लिए बहुत सारा रिलीफ मिलता है। टैक्स में रिलीफ मिलता है, प्रोडक्शंस में रिलीफ मिलता है। आप अगर कुछ मतलब प्रोडक्शंस आप आउटर स्टेट में एक्सपोर्ट करने के लिए जाते हो तो उसमें आपको रियायत मिलता है। दिस आर द इंपॉर्टेंट वर्क्स of licensing, and if found illegal, then the licensing will be effect for maximum 5 years, maybe for 12 years. अगर आप कंपनीज के अंदर में रहते हुए कुछ अनलॉफुल काम करते हो, if you are doing any unlawful works, okay, then what will you do? If the act will, you will going to, your license will be cancelled for next 5 years, or if the problem is very much severe for men, if the problem is very severe, then it may be, the license may be cancelled for next 12 years. Okay, this is very much important. Now, point number 11, power to provide relief to certain industrial undertaking where management control has been taken over by government. Okay, validity 1 year, may be extended up to 8 years, may suspend the applicability of provisions act like Indel Dispute Act, MW Act, or any contract agreement acts forced to take over 5 prices and distributions control. Okay, कुछ कुछ जो होता है, ये लाइसेंसिंग वाला जो होता है, जो अंडरटेकिंग रहता है, उसके लिए बहुत सारा रिलीफ रहता है।
ओके। वेर जो मैनेजमेंट होता है इस कंपनीज का, जो मैनेजमेंट होता है जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है, दे हैव अ स्पेशल कंट्रोल टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट। ओके। जो वैलिडिटी 1 ईयर के लिए आता है, 1 साल का एग्रीमेंट, 1 साल के लिए वो एग्रीमेंट रहता है गवर्नमेंट के साथ। 1 साल के बाद गवर्नमेंट अगर चाहता है तो उसे रिन्यू करता है, गवर्नमेंट अगर नहीं चाहता है तो गवर्नमेंट उसे रिन्यू नहीं करता है, ठीक है। वो 1 साल में होता है। इट मे बी एक्सटेंडेड अप टू 8 ईयर्स, 8 साल के लिए एक्सटेंडेड होता है। जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल, पीएनजी, उसके बाद आपका एक और है लार्सन एंड टार्बो, एलएनटी। दीज और आर अंडरटेकिंग, this undertaking process by the government may extend up to 1 year or maybe up to 8 years. These are all undertaking. Okay, Procter and Gamble, Larson and Turbo. These are all the big reputed companies. Okay, and they may be suspend the applicability for the provisions act like Intel Dispute Act, MW Act, or any contract agreement force in time to take over five rights and distributions control. ये एग्रीमेंट जो है 5 साल के बाद या 1 साल के बाद ये डिसएग्रीमेंट हो जाता है या फिर नल एंड वॉइड हो जाता है, बिकॉज ऑफ एनी एग्रीमेंट, बिकॉज ऑफ नॉन यूजिंग इलीगल, इलीगल वे में प्रोडक्शन करना होता है, या फिर अनलॉफुल एक्ट होता है, या फिर कंपनीज प्रॉफिट नहीं कर रहा, तो क्या करता है गवर्नमेंट, और इस बॉन्ड को आगे नहीं बढ़ाता है, ठीक है, वो स्टॉप हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपनी आया था, यहाँ पर दिया हुआ है इंडिल डिस्प्यूट एक्ट। इंडिल डिस्प्यूट एक्ट एक बना था कंपनीज इन द ईयर 1989 में। आप थोड़ा सा इसको गूगल में सर्च कर लीजिएगा। जहां पर ये प्रोविजंस बना था कि गवर्नमेंट के साथ ये रह के काम करेगा एक ही साथ, 40 एंड 30% शेयर में काम करेंगे। बट एक्चुअली जब ये प्रॉफिट था तो गवर्नमेंट को टैक्सेस चोरी छुपे प्रोवाइड नहीं कर रहा था, बहुत सारा अनलॉफुल इलीगल तरीके से काम कर रहा था। जब गवर्नमेंट को ये पता चला तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर केसेस कर दिया था, और गवर्नमेंट ने यहाँ से अपना जो है, अपना जो एग्रीमेंट था वो उसको हटा लिया था, नल एंड वॉइड कर दिया था। और जिसकी वजह से इंडियल एक अच्छा कंपनीज रहते हुए भी ये डिस्प्यूट कर दिया गया था, और ये डिस्प्यूट मिटा ही नहीं। और इस डिस्प्यूट की वजह से गवर्नमेंट ने बहुत सारा एग्रीमेंट्स, बहुत सारा एक्ट में चेंजेस लाया है, ठीक है। The last point is license. What is license? Look at the definition of a license. A written permission from Government of India to manufacture specified articles in the schedule contains particular name, location, articles to be manufactured, capacity, etc. If the application is approved and not further clearance required, then industrial license may be cancelled. तो लाइसेंस क्या होता है? लाइसेंस एक रिटन परमिशन एग्रीमेंट होता है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मैन्युफैक्चर्ड स्पेसिफाइड आर्टिकल इन कंटेन पर्टिकुलर नेम, जिसमें पर्टिकुलर नेम, लोकेशन, आर्टिकल्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, कैपेसिटी कितना है, एक्सेट्रा, ये सारा कुछ डिटेल्स जो है उस लाइसेंस में मेंशन रहता है, ठीक है। लाइसेंस का इंपॉर्टेंस पता चला आपको, लाइसेंस किस लिए काम आता है ये भी पता चला है, लाइसेंस क्या होता है ये पता चला है, गवर्नमेंट कैसे लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं ये भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. Something which is act as a regulations to empower, okay, of India to pass regulations, government of India to pass rules relating to the foreign exchange in tune with foreign trade policy and of India. This is called FEMA. FEMA is simply a set of rules and regulations which empower the Reserve Bank of India. Reserve Bank को empower करने के लिए FEMA इनेक्ट किया गया था, FEMA को रूल्स एंड रेगुलेशंस में इम्पोज किया गया था इन इंडिया, okay. And what is the work of this FEMA? Just to pass regulations and enables government of India to pass rules relating to foreign exchange in tune with foreign trade and policies of India. FEMA को
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपग्रेड किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए अपग्रेड किया है, और स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड के लिए फेमा को अपग्रेड किया है। व्हाट इज द वर्क ऑफ फेमा? फॉरेन एक्सचेंज के लिए, फॉरेन मॉनिटरी पॉलिसीज के लिए, या फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज के लिए इसको इंडिया में अपग्रेड किया गया था। ये एक पावर है, जो इस पावर स्टेशन की वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को पावर मिलता है। फेमा इज समथिंग, अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। यू लुक एट द लाइन, अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। फेमा एक रूल्स एंड रेगुलेशन का एक सेट होता है। विच एक्ट डिड फेमा रिप्लेस? फेमा रिप्लेस कौन एक्ट को करता है? फेमा रिप्लेस एन एक्ट कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस एक्ट, फेरा। फेमा को रिप्लेस करता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट या फिर फेरा। नेक्स्ट है, व्हाट इज फेरा एंड व्हेन इट इज पास्ड? दीज आर द स्मॉल क्वेश्चंस दैट इज बीन डिस्कस्ड ओवर हियर। Okay, now FERA is a Foreign Exchange Regulation Act or legislation was passed in 1973. It was came into effect on January 1, 1974 में ये आया था। FERA was passed to regulate the financial transactions concerning foreign exchange and securities. FERA was introduced with forex reserve to the country were very low. Okay, so what is FERA? FERA is the Foreign Exchange Regulation Act. Okay, it is a legislation act which is passed in 1973. It came into effect on January 1974 में ये फेरा एक्ट में आया गया था। इट इज व्हाट इज जस्ट टू रेगुलेट द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इसका काम क्या है? जस्ट टू रेगुलेट द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कंसर्निंग फॉरेन एक्सचेंज इन सिक्योरिटीज। इसका काम सिर्फ है जस्ट टू कंट्रोल द फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटीज एंड फॉरेन ट्रांजैक्शंस। इसका काम है फेरा के। वाई वॉज फेरा रिप्लेस्ड? फेरा को रिप्लेस क्यों किया गया था? फेरा डिड नॉट कंप्लाई विद द पोस्ट लिबरेशन पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। फेरा कभी ये चीज लिबरेशन या पोस्ट लिबरेशन या पॉलिसीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्लेस करने के लिए किया गया था। What are the main changes brought in FEMA compared to FERA? It made all the criminal offenses and civil offenses. जब FEMA से रिप्लेस होके फेरा में आया गया था, ठीक है, ये किया इसलिए गया था, मतलब एक पावर से दूसरा और ज्यादा पावर किया गया था, रूल्स रूल्स एंड रेगुलेशंस को और ज्यादा पावर किया गया था। क्यों किया गया था? जस्ट टू मेक ऑल द क्रिमिनल ऑफेंसेस एंड सिविल ऑफेंसेस कंट्रोल करने के लिए किया गया था। कल हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। कल हम लोग फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में हम लोग ये पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सो फार आई हैव कंप्लीटेड, डू यू हैव एनी डाउट? सो फार आई हैव कंप्लीटेड, डू यू हैव एनी डाउट स्टूडेंट्स? नो ना? No, sir. Okay, okay.